number 1. Which base is present in RNA? Question number 5. Watson. Options are DNA. आज हम NCERT क्लास 12th के चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के टॉपिक्स द डीएनए, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए वर्ड से NCERT लाइंस पर बेस्ड MCQs सॉल्व करेंगे। आप सब एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए क्योंकि ये सेशन सिर्फ देखने के लिए नहीं, एक्टिवली सॉल्व करने के लिए है। हर क्वेश्चन के बाद मैं आंसर बताने से पहले 3 सेकंड्स का पॉज दूंगी। उस टाइम में आप अपना आंसर लिखिए और सेशन के एंड में चेक कीजिए कितने आंसर्स करेक्ट हुए। वहीं से आपको पता चलेगा कि टॉपिक सिर्फ पढ़ा हुआ है या एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1. Which base is present in RNA in place of thymine? Options are adenine, cytosine, uracil, guanine. So the answer is 3, 2, 1. Option 3, uracil. Question 2. Which of these is not a pyrimidine? Options are cytosine, uracil, thymine, adenine. So the answer is 3, 2, 1. Option 4. Very basic and easy question. Question number 3. DNA was first identified by, options are Friedrich Miescher, James Watson, Francis Crick, both 1 and 2. So answer lock करो 3, 2, 1. DNA was first identified by Friedrich Miescher. So the answer is option 1. Question number 4. Double helix model for the structure of DNA was proposed by. Options are James Watson, Francis Crick, Erwin Chargaff, both 1 and 2. So the answer is 3, 2, 1. Both 1 and 2. James Watson and Francis Crick. Question number 5. Watson and Crick, 1953, proposed the DNA double helix model and won the Nobel Prize. Their model of DNA was based on. So the statements are: first, X-ray diffraction studies of DNA done by Wilkins and Franklin. 2. Erwin Chargaff's observation. 3. Griffith's transformation experiment. 4. Michelson and Stahl's experiment. And your options are here 1, 2, 3, 4. मॉडल जो DNA का था वो किस पे बेस्ड था? So the answer is 3, 2, 1. तो जो उनका DNA मॉडल था वॉटसन एंड क्रिक का, वो बेस्ड था X-ray diffraction studies of DNA done by Wilkins and Franklin and Erwin Chargaff's के observation पे. तो आंसर क्या होगा? Option 1, 1 and 2. Question number 6. If a double-stranded DNA has 20% of cytosine, what will be the percentage of adenine in it? Options are 20%, 40%, 30%, 60%. So the answer is 3, 2, 1. Option 3, 30%. Question number 7. Histone proteins are, options are basic negatively charged, basic positively charged, acidic positively charged, acidic negatively charged. So the answer is, आंसर लॉक करो 3, 2, 1. Option 2. Basic and positively charged. Question number 8. A typical nucleosome contains 200 base pairs, 146 base pairs, 100 base pairs, 180 base pairs. So the answer is 3, 2, 1. Option 1, 200 base pairs. Question number 9. Mark the wrong statement about euchromatin. Options are: it is densely packed, it stains light,
It is transcriptionally active. All of these. तो आपको wrong statement बताना है. ठीक है, तो आंसर लॉक करो अपना. 3, 2, 1. तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें है ऑप्शन 1. इट इज डेंसली पैक्ड. क्वेश्चन नंबर 10. The packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that are referred to as, options are histone proteins, non-histone chromosomal proteins, tubulin proteins, pilin proteins. So the answer is 3, 2, 1. Option 2, non-histone chromosomal proteins. ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन से हैं. अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शंस में से आंसर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, चैप्टर अच्छे से याद है. और अगर कंफ्यूजन है तो रिवीजन की ज़रूरत है. अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. द स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन सीन एज beads on string when viewed under electron microscope are called, options are nucleotides, nucleosides, histone octamer, nucleosomes. So the answer is option 4, nucleosomes. Question number 12. What did Griffith observe when he injected mice with S strain, R strain, S strain heat killed, S strain heat killed प्लस R स्ट्रेन लाइव? तो सारी कंडीशंस में क्या हुआ था माइस को ये बताना है. ऑप्शंस आर हियर. नाउ टेल मी द आंसर. 5, 4, 3, 2, 1. सो द आंसर इज ऑप्शन 3. Mice lived in conditions 2nd and 3rd, died in 1st and 4th. Question number 13. Which of the following enzymes affect transformation? Options are DNase, proteases, RNases, peptidases. So the answer is 3, 2, 1. Option 1, DNase. Now question number 14. This figure shows, options are, just have a look at the figure. Griffith experiment, Hershey and Chase experiment, Avery, MacLeod and McCarthy experiment, Morgan experiment. So the answer is 3, 2, 1. So this figure shows Hershey and Chase experiment. Question number 15. To prove that DNA is the genetic material, which radioactive isotopes were used by Hershey and Chase in their experiments? So the options are 1, 2, 3, 4 here. So the answer is 3, 2, 1. Option 2, 32P and 35S. Question number 16. The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiments of Macklin McCarthy, Oswald Avery and Colin MacLeod, Alfred Hershey and Martha Chase, Francis Crick and Rosalind Franklin. So the answer is 3, 2, 1. Option 3, Alfred Hershey and Martha Chase. आप अपने आंसर्स लिख रहे हो ना सब? एंड में चेक हो जाएगा कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए. क्वेश्चन नंबर 17. RNA is the genetic material in tobacco mosaic viruses, QB bacteriophage, eukaryotes, both 1 and 2. So the answer is 3, 2, 1. Option 4, both 1 and 2. दोनों में होता है RNA, tobacco mosaic virus में भी और QB bacteriophage में भी. Question number 18. Which of the following criteria should be fulfilled by a molecule to act as genetic material? Number 1, it should be able to replicate. Number 2, it should be stable chemically and structurally. Number 3, it should be able to undergo slow changes. Number 4,
it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. So the answer is 3, 2, 1. तो इसमें ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट सारे क्राइटेरिया होने चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? Number 1, RNA mutates faster than DNA. Number 2, RNA shows catalytic properties. Number 3, presence of thymine at the place of uracil confers additional stability to DNA. Number 4, 3' OH group present at every nucleotide in RNA makes it more labile and easily degradable. तो आपको बताना है कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. So here are your options. तो आंसर करो. सो द आंसर इज 3, 2, 1. स्टेटमेंट 1, 2 and 3 are correct. So option 1 is the correct answer. Question number 20. Last question. Which one of the following was the first genetic material? Options are DNA, RNA, protein, nuclein. इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपना स्कोर भी बताइए. नीट के लिए एनसीईआरटी डीपली पढ़नी पड़ती है, इसलिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए. और अगर एनसीईआरटी को आप पढ़ना नहीं मास्टर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मास्टर एनसीईआरटी क्रैक नीट.